Welcome back. You're watching NewsX. My name is Vineet. The BBC finds itself at the center of a growing credibility crisis. And this time, the questions are coming from both sides of its own hypocrisy. In its coverage of the Ketan Agarwal murder case, the British broadcaster ran a piece questioning what it called a media frenzy in India, framing the case as a fatal fall and suggesting Sia Goel and Chetan Chaudhary are being subjected to a trial by media. Even as Pune Police's own evidence, CCTV footage, forensic reconstruction and digital records pointed towards murder, not accident. But here's the irony. When British MP Rupert Lowe released his independent inquiry report into grooming gangs in the UK, detailing decades of organized child sexual exploitation and institutional failure, the BBC had nothing to say. Lowe himself called it out, focusing the broadcaster of complete silence on a report exposing horrors far graver than anything out in an Indian courtroom. So the question writes itself. Why does the BBC find the energy to question India's investigative process, its police and its media, while staying conspicuously silent on an inquiry documenting the abuse of its own children? It's a double standard that speaks for itself. The BBC schools the world on accountability, yet struggles to hold up a mirror to its own. Dinesh Get, political commentator, joins us on the broadcast to talk more about this. Dinesh, I hope you can hear me. Yes, please. Good evening. Well, this is not the first time the BBC has, done something like this. While focusing entirely on what's wrong in India, they have completely discarded and done away with what's actually going on in its own backyard. Yes, please. Very good evening. The selective perspective from the BBC and selective reporting hampers each and everything, whatever is happening. And they selectively target the political system, the economic system, and everything, and which hampers the ongoing fund processes. जब भी जैसे हमारे देश में कोई किस तरह के जैसे कि मतलब कि फॉरेन फंड अगर आता है तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं उसको लेकर के हैम्पर होता है. दूसरा सेलेक्टिव जैसे पर्सपेक्टिव होता है, इट हैम्पर्स ईच एंड एवरीथिंग व्हेनेवर सम इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न. और बाकी जैसे इससे पहले भी जैसे चीजें रही, जैसे केतन पारेख को लेकर के बोले हैं, जैसे कि अभी जिस तरह की चेतन चौधरी वाली बातचीत को लेकर के बोले हैं, तो दे हैव बीन सेलेक्टिवली टारगेटिंग द थिंग्स दैट द थिंग्स इन इंडिया इज not competent as far as the things are concerned, whether it is fraud or any crime or anything as such. तो उसको लेकर के इन्होंने बार बार इस तरीके से बीबीसी की जो रिपोर्टिंग है, मतलब कि पर्टिकुलरली हिंदी सर्विस, दे हैव पब्लिश्ड एनालिटिकल ऑल्सो एंड दे मेंशन क्लियरली दैट दे आर नॉट कॉम्पिटेंट. और दूसरा जैसे जिस तरीके से कि इससे पहले भी जैसे कि जो चीजें शरीर मतलब वेदर द फाइनेंशियल फ्रॉड थिंग इज कंसर्न, तो अगर उसमें जैसे कोई वेस्टर्न कोई जैसे कि बॉडी इन्वॉल्व होती है, वेस्टर्न कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है, तो उसको लेकर के या वेस्टर्न किसी चीज को लेकर के करते हैं, तो दैट टाइम दे आर वेरी सेलेक्टिव एंड दे प्ले सॉफ्टवेयर ऑन देम. whereas Indian thing is concerned, कोई भी जैसे इंडियन की चीज को लेकर जैसे बातचीत की जाती है, तो उस टाइम पे दे पर्टिकुलरली दे प्ले वेरी हार्ड और उसको लेकर के इस तरीके से करते हैं दैट क्राइम सिनेरियो इज वेरी डिफरेंट थिंग एज फार एज अदर थिंग इज कंसर्न. और उसका जैसे कि वेस्टर्न जैसे मीडिया जो दिनेश जी, थैंक यू सो मच